Hey guys, I hope you all are fine. So let's continue our topic of cell. Today we will discuss about cell theory. Cell theory means a process by which scientists has proved that how we are able to come to know that from where cells has come. It will tell you how cells produced. Some geologist has worked on it and their statements are called cell theory. For the first time, the geologists Sheldon and Schwann work on it. They gave a statement all living organisms are composed of cell and product of cell, but they do not conclude that how cell has produced. Later on, Rudolf Virchow stated that cells come from pre-existing cells. For that, he tell a phrase omnis cellula e cellula. इसका मतलब था कि जो सेल्स हैं वो पहले से ही प्रेजेंट सेल्स से बनी है. That means when a cell dies, their nutrients is used to produce a new cell. रुडोल्फ विर्को ने 1855 में जूलॉजिस्ट शिल्डन और स्वान के वर्क को आगे कंटिन्यू किया एंड ही कम टू द रिजल्ट हाउ सेल्स हैज प्रोड्यूस्ड. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स, रुडोल्फ विर्को comes after the name of Sheldon and Swan. If questions come, who is the main researcher of cell theory, then your answer should be Sheldon and Swan. आज हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो we are going to discuss about a overview of a cell. There are two types of cells, eukaryotic cell and prokaryotic cell. Listen, when you are talking about eukaryotic cell, so you should know what's the difference between eukaryotic and prokaryotic. Here, eukaryotic cells means, for example, this is a cell. This is a cell and its nucleus. If this nucleus has a well-defined membrane, so you will call it a eukaryotic cell. And if the cell has genetic material but it is not covered by any well-defined membrane, that means this nucleus has no membrane, so you will call it prokaryotic cell. But the basic same thing in both of them is present of a arena. Arena means that cytoplasm you will get in both type of cells. Now about eukaryotic cells, there are some organelles which present only in eukaryotic cell. When these organelles are membrane bound, so it is present in a eukaryotic cell. आज हम सिर्फ इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं. इनकी फंक्शंस वी विल स्टडी इन लेटर क्लासेस. ER stands for endoplasmic nucleus. ER stand for endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? आई विल टेल यू लेटर. नेक्स्ट इज हेयर Golgi complex. What is the main function of Golgi complex? The main function of Golgi complex is to pack the formed products. It may be a protein or any other thing. Okay. Here next is lysosomes. What is the main function of lysosomes? Lysosomes are also called suicidal bag. If you want, you can take a pen or copy. Please note down these things. These are useful to you. Lysosomes, they are known as suicidal bags because they have all enzymes which have capacity to break all types of components which present in our body. If a lysosome breaks down, it is capable to eat up its own cell.
That's why they are known as suicidal bags. Here next is mitochondria. What is mitochondria is? Mitochondria is also known as powerhouse of the cell. पावर हाउस का मतलब ही अपने आप में होता है एनर्जी जनरेट करने वाली चीज। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज एबल टू प्रोड्यूस ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द पॉइंट ऑफ एनर्जी इन आवर body. Next is here microbodies. What is microbodies is? Microbodies are small particles which help in the formation of new things during the cell formation. And last but not the least is vacuole. Vacuole is a simple substance in our body which absorb waste products from the cell. You all know when a cell dies, it releases some waste material. If cell don't have a vacuole, then where that material will go? So for that, our body has a product that is known as vacuole. आप इस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें आपको बाकी सारी चीज़ें दिख रही हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम्स आपका काम आते हैं जब आपकी सेल डिवीज़न करती है. उस टाइम पे इनकी हेल्प से क्रोमोसोम्स पोल्स पर जा सकते हैं. उसके बाद है आपका साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन क्या होता है? जो हमारी मसल्स हैं जो उनकी मूवमेंट के लिए हमें साइटोस्केलेटन की ज़रूरत पड़ती है. इसमें 2 टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, मायोसिन एंड एक्टिन. ये हमारी मसल्स को अलग अलग टाइप से मूव करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर है आपका न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं. न्यूक्लियस हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है सेल का जिसके पास सेल की सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है. न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस होता है जो कंटेन करता है आपका DNA. I hope you all remember it. Here is cytoplasm is also known as cytosol. You don't need to be confused between cytosol and cytoplasm. These both things are same. I have a note for you. That means it is very important thing. Prokaryotic cell lack these organelles. These organelles means membrane bound organelles are absent in prokaryotic cell, and this is the basic difference between prokaryotic and eukaryotic cell. There is a very important product we have is ribosome. Ribosome are present in both type of cells. Why ribosomes are so important? They are important because they are able to produce proteins, and proteins are the basic thing which help in the growth of a cell. Okay guys, next point is this: ribosomes are non-membrane bound organelles. As I have already told you that ribosomes, okay, let me remind you one thing is that prokaryotic cell lack membrane bound organelles, and here is ribosomes are non-membrane bound organelles. So ribosomes are present in prokaryotic cell. There is a very interesting thing is chloroplast and mitochondria. About chloroplast and mitochondria, you have maybe know that they can survive independently. Why and how? Because they have their own DNA and they have their own ribosomes. DNA can produce any material which is helpful for the survival of a cell, and ribosomes are helpful for the growth of the cell. This is only happens in chloroplast and mitochondria. In our body, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ऐसे होते हैं जिन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हें बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. What is the use of rough endoplasmic reticulum? I will tell you later. For now, this is enough, and let us remind our last class, what we have studied in that class. I will take your 2 minutes for the revision of your first class. What are cells? What type of cells are there in our body? Who discovered cells in us? And who are responsible for the डिस्कवरी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल को डिस्क्राइब किया था, वो जो डेड सेल थी और
प्लांट की बार्क से डिस्क्राइब किया था। लिविंग सेल को एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने डिस्क्राइब किया था। आपको ये साइंटिस्ट जूलॉजिस्ट के नाम जरूर पता होने चाहिए। दीज आर ऑल्सो यूजफुल फॉर यू फॉर योर नीट एग्जाम्स, ओके। एंड जो आपका न्यूक्लियस था उसको किसने डिस्क्राइब किया था? न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑल फंक्शंस। ऑप्शंस हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। जस्ट ट्राई इट एट योर होम एंड हैव अ गुड डे।